Hello everyone, so welcome back to a new video. So in this video we will be discussing about the important questions of environmental science theory into practice 2. So इसमें हम वो सारे important questions discuss करेंगे जो previously आ चुके हैं या फिर जिसके आने के chances बहुत ज़्यादा high हैं. So हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे इसमें. सबको पता होगा कि ईवीएस में बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है. सो इसमें हम पार्ट ए में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड पार्ट ए में हमारे बेसिकली डेफिनेशंस, शॉर्ट नोट्स या नॉर्मल जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, इवन फुल फॉर्म एक्सपैंड करने आता है. सो ये सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए. वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड मेक श्योर to share this video among your friends. So firstly it is given define the following, जिसमें आपको पहले डिफाइन कर रहा है biological oxygen demand, second is gross primary productivity, third you need to define primary pollutant, fourth is geothermal energy, fifth is sustainable development. So let's firstly define biological oxygen demand. So biological oxygen demand is basically the measure of कितना ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर. ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली अकर करता है एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज डेड प्लांट्स, waste materials or leftover food particle. The higher the oxygen organic matter in the water, the more oxygen the microorganism needs to consume. जितना ज़्यादा organic matter रहेगा वाटर में उतना ज़्यादा ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ताकि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है उसको कंज्यूम कर पाए. अ हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट करता है कि जो वाटर है दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन और यू कैन से द ऑर्गेनिक मैटर जो कि एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचा सकते हैं बिकॉज दे डिप्लीट द ऑक्सीजन नीड फॉर देयर सर्वाइवल. Second is gross primary productivity, GPP. So it refers to the total amount of energy that plants produce through photosynthesis in a given area over a required period of time. So हमें पता है कि during photosynthesis plants जो है वो sunlight capture करते हैं and they use it to convert carbon dioxide and water into glucose which stores energy. So ये जो energy होता है ये क्या होता है? तो starting point होता है of the food chain and that supports all life in the ecosystem. So basically GPP एक essential indicator है of how much energy an ecosystem can generate and sustain. Next, you need to define primary pollutant. So primary pollutant is a type of pollution causing substance that is directly released into the environment in its original form. So always remember that it is released in its original form from a specific source. And what can be the sources? They can be vehicles, factories, power plant or natural events like volcanic eruption. So ये सारे pollutants जो होते हैं are emitted in their original form and cause pollution without undergoing any chemical change. So अगर आप इसका example देखो तो example of primary pollutants include carbon monoxide, and carbon monoxide is produced by vehicle exhaust, sulfur dioxide that is released from burning coal and oil, nitrogen oxides from industrial processes and particulate matters like dust and soot. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. सो जियोथर्मल एनर्जी जो है एक रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्स है जिसको कि हम अर्थ के नेचुरल हीट से डिराइव करते हैं. दिस हीट प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डीके मोल्टेन रॉक इन द अर्थ कोर. इसको हम हार्नेस करते हैं बाय ड्रिलिंग वेल्स टू एक्सेस हॉट वाटर और स्टीम. सो इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और प्रोड्यूस डायरेक्ट हीटिंग फॉर होम्स एंड इंडस्ट्रीज. Geothermal energy is sustainable, environmentally friendly, and reliable through though it is limited to areas with accessible resources and required high initial investments. Next, we need to define sustainable development. So, sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability of the future. So, हमें present का need तो meet करना ही है, but हमें ऐसा कोई भी step नहीं लेना है जिससे future generation की ability जो है वो compromise हो. So, basically it focuses on balancing economic growth, environment protection and social well-being. So this include using resources wisely, क्योंकि अगर आप wisely resources को use करोगे तभी तो आप future generation की ability को compromise या उसको affect नहीं कर पाओगे. So basically the goal is to create a better life now while preserving the planet for the future. Now it is given match the following. So green revolution को आप मैच करोगे MS स्वामीनाथन से, मिथाइल आइसोसाइनाइड को मैच करोगे ग्लोबल गैस डिजास्टर से, यूरेनियम इज डेफिनेटली अ न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूल एंड स्ट्रेटोस्फेयर को आप ओजोन लेयर से रिलेट कर पाओगे एंड सेपोट्रॉप्स को आप अर्थवर्म से रिलेट कर पाओगे. सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग. इसके भी कभी कभी रिपीट होने के चांसेस होते हैं, सो आप एक बार मैच द कॉलम के भी देख लो कि किससे कौन मैच हो रहा है. सो यू विल गेट द आइडिया. नाउ इट इज शॉर्ट नोट्स. सो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं तो पहला तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम पे. सो हमारा जो इकोसिस्टम है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट कंसिस्ट करता है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू मेंटेन द बैलेंस एंड सपोर्ट लाइफ.
सो जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो बेसिकली नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं लाइक एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट एंड मिनरल्स। ये जो है हमें एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर हमें प्रोवाइड करते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली नीड्स टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स रिलाई ऑन सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स नीड वाटर फॉर हाइड्रेशन। सो बेसिकली दे आर इंटरडिपेंडेंट। सो हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है, on the other hand, it includes all living organisms in the ecosystem such as plant, animals, and microorganisms. ये divided है further to into producers, consumers, and decomposers. So producers जो होते हैं, producers are like plants that make their own food using sunlight, while consumers such as herbivorous, carnivorous, omnivorous, they rely on other organisms for food, and decomposers like fungi, bacteria, which break down dead organisms, recycle nutrient back into the environment. So ये सारे component मिलके एक साथ काम करते हैं and they form cycles such as nutrient cycle, food chain to keep ecosystem functioning and support life. So the interaction between the living and non-living part of the ecosystem is very important, and it ensures the survival of different species and overall health of the environment. नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। सो एयर पॉल्यूशन जो है इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट अफेक्टिंग बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द अर्थ इकोसिस्टम। सो एयर पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको अफेक्ट करता है। सो प्राइमरी सोर्स अगर आप एयर पॉल्यूशन का बोलो तो इट इंक्लूड्स इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो नाउ वी विल सी सम की इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। सो हमने इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। सो पहला तो इफेक्ट इट कॉजेज ऑन एनवायरमेंटल चेंज लाइक एयर पॉल्यूटेंट्स सच एज carbon dioxide, CO2, and methane, CH4, are greenhouse gases that trap heat in atmosphere leading to global warming and climate change. दूसरा एसिड रेन, जो एयर पॉल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, दे मिक्स विथ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर और फिर वो एसिड्स बनाते हैं दैट फॉल्स एज एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो होता है वो सॉइल को हार्म करता है, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन इन सबको हार्म करता है, मेकिंग द एनवायरमेंट मोर एसिडिक एंड डैमेजिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स। नेक्स्ट इज हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो पॉल्यूटेंट एयर ये डायरेक्टली जो है प्लांट को डैमेज करते हैं, उसके लीव्स को डैमेज करते हैं, और अगर लीव्स डैमेज होगी तो फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली रिड्यूस होगा विच impacts द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर affected by air pollutants such as particulate matter and toxic gases leading to respiratory diseases, weakened immune system and other health problems. Fourth point is ozone layer depletion. So certain pollutants like chlorofluorocarbons, CFCs destroys the ozone layer. ये ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जितना ज़्यादा थिन हमारा ओजोन लेयर होता जाएगा उतना ज़्यादा हाई रिस्क होता जाएगा ऑफ स्किन कैंसर, अदर हेल्थ इश्यूज, ऑल्सो डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम। Lastly, visibility reduction like air pollutants जो होते हैं that lead to the formation of smog which reduces visibility in many areas. So smoke जो होता है that can also have a harmful effect on human health, especially for people with respiratory problems. Next, you need to write a short note on Bhopal gas disaster. So Bhopal gas disaster जो था basically it occurred on the night of December 2. So यहाँ पे 2 and 3 मैंने इसलिए लिख रखा है because ये overall duration दिखा रहा है like midnight of 2 को start हुआ और early hours of 3 December तक ये continue रहा in 1984. That's why मैंने इस type से इसको लिख रखा है. It is showing the whole duration. In Bhopal, India, when a toxic gas जो था वो leak हो गया था at the Union कार्बिड पेस्टिसाइड प्लांट रिलीज अ डेंजरस केमिकल कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये रिलीज हो गया था इनटू द एयर। ये गैस जो था क्विकली स्प्रेड किया विच कॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू सफर फ्रॉम सेवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इमीडिएटली एंड मेनी मोर वेयर अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी इशूज, ब्लाइंडनेस एंड अदर्स लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस। तो ये जो डिजास्टर था इट ऑल्सो काउज्ड मेजर एनवायरमेंटल डैमेज एज ये गैस जो था ये सराउंडिंग को भी कंटेमिनेट कर दिया, इवन कंटेमिनेटिंग द सॉइल एंड वाटर। फर्दर यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड अ promising source of energy in the future. We know that nuclear energy is considered a promising source of energy in the future. तो हमें डिस्कस करना है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और हमें ये बताना है कि why nuclear energy is not used on large scale currently. हमें पता है कि ये मेजर सोर्स है ऑफ एनर्जी बट स्टिल इसके इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी ये लार्ज स्केल पे यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। सो इसलिए इसको आपको डिफाइन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो पहले तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताना पड़ेगा। सो लेट्स सी, न्यूक्लियर एनर्जी इज कंसिडर्ड अ प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फ्यूचर ड्यू टू सेवरल की बेनिफिट्स। फर्स्ट कि ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्यूल, मेकिंग इट हाईली इफिशियंट। Unlike fossil fuels, nuclear energy does not release harmful greenhouse gases like carbon dioxide, which contribute to climate change. So, this makes nuclear energy a cleaner alternative for reducing air pollution and combating global warming. एडिशनली अगर आप देखो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो काफ़ी स्टेबल और रिलायबल होता है।
supply of energy as they are not affected by weather conditions, unlike solar and wind power. Nuclear energy also उसके पास potential होता है to meet the growing global demands of electricity as the world's population and industrialization continue to rise. However, इसके इतने benefits होने के बाद भी इसको इसलिए widely use में नहीं लाया जा रहा on large scale due to several challenges, क्योंकि इसके कुछ challenges भी है. One of the main issue is the high cost. इसका cost जो है वो बहुत ज़्यादा high है because it takes high cost of building and maintaining nuclear power plant. So the initial investment for setting up nuclear power is very expensive and the construction can take many years. Additionally, there is the problem of nuclear waste which remains radioactive for thousands of years. So another concern is the risk of accidents like Chernobyl disaster in 1896 एंड फुकुशिमा डिजास्टर इन 2011 जो कि वाइड स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा फियर और डैमेज क्रिएट किए थे बोथ टू द ह्यूमन लाइफ्स एंड द एनवायरनमेंट. सो दीज रिस्क अलॉन्ग विथ पब्लिक कंसर्न्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी मेक्स इट्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट. इसीलिए गवर्नमेंट ये सब ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है इन न्यूक्लियर पावर ऑन लार्ज स्केल. नाउ यू नीड टू एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स. सो पहले तो आपको इन टर्म्स का फुल फॉर्म लिखना है. सो फर्स्ट इज गिवन EPA, so that is Environmental Protection Agency. Next is OPCW, that is Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Third is CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Fourth is CBD, that is Convention on Biological Diversity. Fifth is MAB, that is Man and the Biosphere Program. Next is NMEEE, that is National Mission on Enhanced Energy Effectively. Last is UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, and IPCC, that is Intergovernmental Panel on Climate Change. नाउ आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसको कि आपको डिस्कस करना है. सो यू नीड टू डिस्कस द वेज इन विच प्रोजेक्ट टाइगर हैज हेल्प द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया. सो प्रोजेक्ट टाइगर इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग टाइगर्स एंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. सो बाय क्रिएटिंग टाइगर रिजर्व्स, the project has safeguarded not only tigers but also animals and plants that share their habitat. So it protects forests which are important for maintaining clean air, water and a stable climate. So anti poaching measures लिए गए, better technologies लाया गया like cameras and tracking systems जो कि help किया not only reducing illegal hunting of tigers and other wild animals but also it involved local communities in this conservation program, which has reduced conflicts between human and wildlife and raised awareness about protecting nature. So, the number of tiger reserves has grown, converting more areas in rich biodiversity. And project जो है encourage किया research, monitoring, ecotourism, which supports local economies while promoting conservation despite challenges like habitat loss, climate change. ये project जो है project tiger ये एक big success हुआ है in saving tigers and preserving nature in India. So this was all for today's video. So अगर आपको और भी ऐसे videos चाहिए on the important question or discussing previous year, so you can let me know in the comment section.